morning, namaskar and a very warm welcome. Sunday will turn out to be a super Sunday for all the viewers as we'll be getting covering of the medals. लेकिन आज भी काफी medals रहेंगे स्टेज पर. बहरहाल to talk about various events, the sports, the competition, the players and all those interesting बातें जो कि आपको कहीं नहीं केवल डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम तक ही आप तक पहुंचेगी. To talk about all this and lot more, मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं. मिलकर स्वागत करते हैं रुपिंदर सिंह. A very welcome, Rupinder ji. Good morning, Super Sunday, Shikha, as you've said, and viewers. Get up your knowledge about Indian sport also. I'm sure you would have watched some NBA action early morning, but Indian sport is most relevant. And here we are with all about the Indian sports at the university level. Absolutely, the Indian sports at university level. जिस हम कह सकते हैं माउंट जोश की बात करें, कंपटीशन की बात करें, कल भी हमने देखा किस तरीके से विमेन कबड्डी में भी हमने देखा कितना क्लोज कंपटीशन था. शुरुआत बात करते हैं वॉलीबॉल से. वॉलीबॉल का भी कल मैदान था, लेकिन उसी के साथ साथ जो जोश हम देखते हैं इधर एट द हम कहें नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल, वो खेल देखते ही बढ़ता है और बनता है. रुपिंदर जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरा एडिशन है. ऑलरेडी कोई सुपरस्टार्स आ चुके हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हैं. और कल ऐसे 2-3 स्टार छाए, जैसे शूटिंग में ऐश्वर्या प्रताप तोमर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस जीते और महली घोष 10 मीटर एयर राइफल जीती. साथ ही साथ स्विमिंग में शिवा श्रीधर जैन यूनिवर्सिटी के, अनीश गौड़ा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के. So we can say such platform has a right gateway to get into the world of that international sports and international competition. Absolutely, it was something that India needed, has been provided for 3 years, and I always keep saying we compare with USA, which wins the medals at the Olympics. USA has had this collegiate system running for 100 years. हमने खाली 3 साल दिए हैं अपने बच्चों को. So this is some of the things which are being rectified. Absolutely, which have been rectified. Indeed, जिस तरीके का हम कंपटीशन देखते हैं जिसकी बदौलत हम स्कोर्स भी आपके साथ जानेंगे. तो शुरुआत करेंगे वॉलीबॉल के इवेंट का जो कि हमने देखी एज राइटली देयर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन. वॉलीबॉल की शुरुआत करते हैं फाइनल्स में. व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंस कैटेगरी, इट वाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी and Mangalore University, and winner turned out to be the Kurukshetra University. I would say not only in volleyball, हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का दमदमा देखा और किस तरीके से हम अपने दर्शकों को हाइलाइट्स भी दिखा पा रहे हैं उस फाइनल मैच की. बिल्कुल, और आप ये मैच में देखेंगे पहला सेट थोड़ा वन साइडेड था, पर उसके बाद सेकंड और थर्ड सेट्स में बहुत अच्छा कंपटीशन रहा. और पहला सेट वन साइडेड 25-18, उसके बाद 25-22 और 25-23. सो कुरुक्षेत्र बहुत इजी नहीं, मशक्कत करके ही गोल्ड मेडल जीता. और यही इम्पोर्टेंट चीज है इन यूनिवर्सिटी गेम्स की कि कंपटीशन का लेवल बढ़े और इम्प्रूवमेंट आए बच्चों में. बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, तैयारी आपको करवाई जा रही है, तो आपको उस तरीके का परफॉर्मेंस देना है जिसकी जो कि बदौलत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दिया. दे बीटेड द बैंगलोर यूनिवर्सिटी टू एक्चुअली क्लिंच द गोल्ड. बढ़ते हैं आगे. फ्रॉम वॉलीबॉल हम चलते हैं अगले खेल की ओर, विच इज द मलखम, और उसमें देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन्स कैटेगरी. आइए नजर डालते हैं. सो इट वाज विक्रम यूनिवर्सिटी हु क्लिंच्ड द गोल्ड with a score of 121.45, followed by Savitribai Phule University 121.05 for the silver medal, and the bronze was taken by University of Mumbai with a score of 119.8. तो हमने यहाँ मलखम में भी देखा with the finesse they performs. Absolutely, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है. पोल मलखम, हैंगिंग मलखम, रोप मलखम, तीनों में आउटस्टैंडिंग देखते ही बनता है. और इनफैक्ट इवन दो इट हैज ओरिजिनेटेड मेनली फ्रॉम द वेस्ट महाराष्ट्र रीजन से, अब आस्ते आस्ते और यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी करने लगे हैं. और जब तक मलखम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आता, ऑल्दो इट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस एंड स्ट्राइड्स, तब तक इन बच्चों को मैं देख रहा हूँ ईजिली जिम्नास्ट के स्काउटिंग करके
जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में डाल देना चाहिए जब तक मलखम एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में नहीं बट आता। व्हाई मलखम? व्हाई डू यू थिंक वन शुड चूज मलखम? अगर आप कह रहे हो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं है, एक्सपोजर इंटरनेशनल नहीं है, बट लुक एट द इलास्टिसिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, द स्ट्रेच दैट दे हैव। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप महाराष्ट्र से ये आया है, गणेश चतुर्थी पे दे मेक ऑल दोस पिरामिड्स, घड़ा तोड़ते हैं, सो दे गेट इनटू दैट ड्यू टू द डाइवर्सिटी। जैसे खो खो खेलते थे हम बचपन में, फिर कबड्डी खेलते थे, फिर कबड्डी अब एशियन गेम्स के लेवल में आ गया और वहाँ भी एक प्रो लीग आ गया, इंडिया अच्छा करने लगा। और यूनिवर्सिटी लेवल में भी हमने कल देखा मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ ने टीम्स को इतना अच्छा इवॉल्व कर दिया है। तो यही तरीका है मलखम का, इनिशियल स्टेजेस है, बट आई स्टिल थिंक ट्रेडिशनली वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर थिंग्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू इंट्रोड्यूस मलखम and yogasans at the Khelo India Games. Absolutely. Probably these are the steps. Once you introduce them at the school level, at the university level, then the Khelo India level, this is actually the steps by which you raise up the ladder. And rightly said by Rupinder, चाहे कबड्डी की भी बात करें, how kabaddi is actually now catching the attention at the national level. और हमने देखा पंजाब के बारे में भी जो हम कहेंगे कि initially they were not so much into, but amazing they're performing, especially when talking kabaddi as well. हाँ, आई थिंक सो। पंजाब में क्या हुआ था, आई थिंक 84 के बाद थोड़ा सा सेटबैक हुआ and it took time for them to recover, but yes, Punjab is back to its glory days and is performing well and will be amongst definitely the top universities. And Punjab has various universities, Punjab, Guru Nanak Dev, Talwandi Sabo, lovely professional universities, Chandigarh University. तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आ रहा है और पांचों के पांचों और छहों जितने भी हैं सब अच्छे मेडल्स जीत रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जैसे कि हम अभी कुछ दृश्य देख पा रहे हैं, यस्टरडे वी हैड द फाइनल्स ऑफ द बोथ मेन एंड वुमेन इन द कबड्डी, और कबड्डी के स्कोर भी हम आपको बताए। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि टॉकिंग अबाउट द पंजाब एज वेल, हाउ दे आर कमिंग अप बैक इनटू द लाइमलाइट। बट इसी के साथ आपको कबड्डी के फाइनल स्कोर्स बता दें। गुरु काशी यूनिवर्सिटी बीटेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर 44-36. When we talk about the kabaddi men's final, Chandigarh University lost to Guru Kashi University. हाँ, गुरु काशी यूनिवर्सिटी एक्चुअली सेमीफाइनल में भी खूब डोमिनेट करके वन साइडेड मैच जीता था। चंडीगढ़ had a thriller in the semi-final. They won by 1 point, 33-32. And लगता था उस परफॉर्मेंस से कि तलवंडी साबो गुरु कृष्ण यूनिवर्सिटी फाइनल में प्रिवेल करेगी और वही रिजल्ट हुआ। Absolutely. और when we talk about the males, let's move on to the women's category. और final boys आप इस समय स्कोर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। It was Chandigarh University who lost to Guru Kashi University. 36-44 was the score. और इसी के साथ the gold went to the favor of Guru Kashi University. Silver was bagged by Chandigarh University and Wales University, और SRM University में they shared the bronze. And from men's, we move on to the women's category. What a nail-biting match it was between the Himachal Pradesh University and Kurukshetra University. How Himachal Pradesh, these girls, they came back and the defending champion Kurukshetra University, they were strong, but जिस तरीके से हम दृश्य देख पा रहे हैं, what an amazing match, Rupinder, it was. I think so. This was the match actually which stole the limelight yesterday. Himachal was in the game for the gold till the end, but the women from Kurukshetra were outstanding, and their pride and their strength and their endurance carried them through. Nail-biting final, deserving of a final, and finally Kurukshetra deserved that gold. Absolutely, Kurukshetra did deserve that goal, but at the same time, watch this lovely action, how she jumped over how she the jumped defender. And grabbed, and actually this is what counted, and finally gold went into the favor of Kurukshetra University. एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, गोल्ड जीता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, लेकिन दिल तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने भी जीता. They got the silver and the bronze were between University of Burdwan and Jind University. बढ़ते आगे. So from kabaddi, let's move on to basketball. Basketball semi-finals, we had the men's semi-final yesterday, and let's take a quick look at the score where Jain University beat the Punjab University for the score 74-49.
So Jain, did you happen to see this match? Jain University is right there at the top in the medal tally as well. They're Yes. coming as a strong, robust players. And it's interesting to note कि जैन यूनिवर्सिटी ज़्यादातर अपने मेडल स्विमिंग से ले रहा था और फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग सरप्राइज कि बास्केटबॉल पंजाब में, यूनिवर्सिटी जी। को फाइनल में हरा के बास्केटबॉल भी जीता तो ये देखो जैन यूनिवर्सिटी होस्टेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स द सेकंड टाइम जी, ओवर जी, जी। एंड फ्रॉम दैट look How how they have much evolved. improvement they have got. So I'm hoping Uttar Pradesh also will benefit from this exposure that they're having in 4 cities of theirs and of course shooting in Delhi. Absolutely. This is a sense of such games, Rupinder, when the students are performing, the players are performing. We won't say that academics take a second seat, the back seat, but how they create a balance between the sports and the academics. That is exactly what it is all about. अब तक sports को वही वाली बात थी कि खेलोगे कूदोगे बनेगे बनोगे खराब खराब। और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जवाब अब वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा जी। है with the introduction of sports and Manu Bakar is Bakar. the epitome of that. She's Absolutely. winning at the world level and she is training to be a doctor in her medicine. So This is what बिल्कुल। we should try and So achieve. are we expecting many more gems coming out at this level as well in this year as well, which Absolutely. will actually shine bright at the international level? Rupinder? I have confidence in the potential of the Indian children and I think this is a very good opportunity which they will grab with both hands. Absolutely. With the fingers crossed, we are expecting our boys and girls to perform amazingly at the international level as well. So from basketball, let's move on to football and let's take a look at the score. Guru Nanak Dev University versus Punjab University. It was 1-0 and the goal went into the favor of Guru Nanak Dev University. From men's, let's move on to the women's final Kabaddi, which we have already discussed. It was 32-30. Kurukshetra University grabbed the gold. So, अगर आप ऐसे कंपटीशन में बड़ा दुख होता कहते हैं कि उनको गोल्ड मिला उनको सिल्वर मेरे हिसाब से कबड्डी जीता ना कि कुरुक्षेत्र या हिमाचल आउटस्टैंडिंग कंपटीशन देखते ही बनता है और दिस इज व्हाट स्पोर्ट एंड लाइफ इज ऑल अबाउट But how does the one who's grabbing the silver, what memories do they take back hold? कि हम जीत गए या हमने बिल्कुल, we gave the strong fight to the contender. आई थिंक दे शुड बी हैप्पी टू द एक्सटेंट कि जीत गए पर इतना भी गुस्सा होना चाहिए कि अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा But कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द डिफेंडिंग चैंपियंस उनको पता था हमने भी अपना टाइटल संभाल के रखना है. Exactly. And this is the healthy competition we want to be encouraged amongst the universities. Absolutely. When they compete at an opportunity like the Khelo India University Games. So the girls were fierce, the girls were strong, the girls were strong-headed, and that was rightly there on the mat, on the screen. और तभी तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं. The third edition of the Khelo India University Games 2022 right at your television set through DD Sports. तो बढ़ते हैं आगे. स्विमिंग पर आज भी निगाहें टिकी रहेगी. Many medals will be showering in the swimming event as well. आइए देख लेते हैं कल क्या चहल पहल रही when we talk about swimming men 4x200 meter freestyle. Sukesh from Anna University, Tamil Nadu took the gold with an amazing timing of 3.38, followed by Shubharant Patra from Jain University and Priyanshu from Delhi University grabbed the gold with the time limit of 3.4.94. From there, the next category is men's 200 meter butterfly result. Anish Gowda from Christ deemed to be University, followed by R.N. Panchal who took the silver, and bronze went into the favor of Jain University. Shubharant Patra, the swimmer, who took the bronze. और इसमें हम बता दें अमीश गौड़ा 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ऑलरेडी. जी 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. और कोटा यूनिवर्सिटी फिरदौश कैमखानी who took the gold in women's 400 meter medley result, followed by Rajeshri Bandedkar from Jain University again, and Kalyani Saxena from Sarvajanik University took the bronze. और एक और एग्जाम्पल मिक्सचर का जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को हम समझते हैं कि वो जगह है जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं IAS IIT But अब उनके पास खिलाड़ी भी हैं. Yes. So I think that is the right amalgamation when we say ना एक Yes. क्या है एक when we talk about the college or university or a school, it's a learning hub. So why to learn Absolutely. from the books? Absolutely. Learn from life, learn from sport, learn from everywhere you get an Everywhere. opportunity. And when we have the mentors like you, who has been not only talking on television, writing down, but you are teaching, coaching as well. Yes, So I that- enjoy it. I love it. It's a passion. And the rewards are much more than people talk about in terms of monetary benefits or
It's a real commercial things. contentment probably. Absolutely, highest order. So that's coming right from the heart of a teacher who's a coach as well. बढ़ते आगे स्कोर की बात कर रहे हैं तो नजर डालते स्विमिंग मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल अनीश गौड़ा अगेन फ्रॉम द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टेकिंग द गोल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉलोड Anurag Singh who's from University of Delhi and Dhyan Balakrishna from Jain University Karnataka who took the bronze. In fact, Amish Gowda, Siva Sridhar and Srihari Nataraj of these universities have competed successfully at the international level. Fabulous. So from national to international, these are the exposure which our children, the swimmers, the players get. और बढ़ते आगे स्विमिंग मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक बेंडिक रोहित फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी टुक द गोल्ड सिल्वर वेंट इनटू द फेवर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रथम शर्मा एंड शिवा श्रीधर द जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका टुक द गोल्ड रोहित बेनेडिक्शन की यहाँ बात करनी होगी जब तक शिवा श्रीधर और अमीश गौड़ा स्टार्स हैं अब उभरता हुआ स्टार एक आ रहा है तो ये अमलगमेशन भी बहुत अच्छा है एक्सपोजर मिला रोहित ऊपर आया शिवा और अमीश ऑलरेडी ऊपर हैं बिल्कुल तो यही हर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना और ऐसी सीढ़ी चढ़ रही है सृष्टि उपाध्याय उत्तरा गोगई और प्रियंका जिनको मिला गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज रिस्पेक्टिवली इन स्विमिंग विमेंस 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक तो बिल्कुल किस तरीके से एक जैसे हम कहते हैं ना पाए दर पाए आप पहले स्कूल में भी आप इंटरनल एग्जाम्स देते हो वाइवा देते हो यू फेयर फॉर द फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल ऐसे ही ये हर स्टेप के एग्जाम्स है जो कि आपको एक ब्राइट स्टार बनाएंगे बिल्कुल ब्राइट स्टार बनाएंगे यही डिफरेंस है हमें कॉम्पिटिशन्स कम मिलते हैं अब जब हम छोटे थे तो एक दिल्ली स्टेट मिलता था एक नेशनल्स और कुछ नहीं होता था हाँ एक आध बीच में इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर स्कूल और कई स्कूल्स इंटर स्कूल में पार्ट भी नहीं लेते थे तो बहुत कम मौके थे अब ये बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही भारत ऑब्वियसली अच्छा करेगा स्पोर्ट्स में And do you think even the institutes on the whole, universities on the whole are putting in extra efforts to bring out those talent? अब हर अब जैन यूनिवर्सिटी पहले बहुत जैन यूनिवर्सिटी दैट्स राइट द नंबर टॉप कोटा यूनिवर्सिटी का हमने नाम लिया तो अब यूनिवर्सिटी भी 200 यूनिवर्सिटी दे आर पार्टिसिपेटिंग दे आर आल्सो टेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू ब्रिंग आउट द प्लेयर्स एब्सोल्युटली उन सबको लग रहा है जैसे कंट्रीज स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं टू शो देयर सॉफ्ट पावर चाइना क्यों इतना अच्छा करता है चाइना हैज टेकन अपॉन देम कि हमने तो करके ही दिखाना है और यूएस से compete करता है और भारत कम नहीं है हमारे पास भी उतना टैलेंट है वी शुड बी एमिंग टू बी इक्वल टू चाइना इफ नॉट बेटर एब्सोल्युटली on that note being equal to that if not better but why not better if we have infrastructure we have the support we have the strong training and undoubtedly we have the talent then what right is right talent right nurturing at the right time बढ़ते आगे another ping pong game that's the table tennis men's result wherein Chitkara University took the gold and silver went into the favor of Chandigarh University और Gujarat University और University of Madras को मिला bronze medal in the table tennis men's result. So from men's, let's move on to the women's category where SRM University, Tamil Nadu took the gold, Adamas University took the silver, or University of Calcutta and Chitkara University took the bronze respectively. तो यहाँ भी हमने देखा कि टेबल टेनिस का अगर आपने मैच देखा इट वाज वेरी क्रूशियल और बहुत ही मज़ेदार रहा जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली और इनफैक्ट टेबल टेनिस एक स्पोर्ट है जो यहाँ से बढ़ता हुआ अब इनफैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे थे मनिका बत्रा सत्यन शरद कमल श्रीजा कूला सब यहाँ से बढ़ के अब उस लेवल पे पहुंचे और प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए इन अ गेम वे इंडिया इज नॉट सो वेल नोन चाइना एंड कोरिया एंड इंडोनेशिया एंड डेनमार्क एंड स्वीडन डोमिनेट सो इंडिया डूइंग वेल कॉमनवेल्थ गेम्स में वी वन 4 गोल्ड मेडल्स It was a tremendous performance and it's courtesy these opportunities that the children are getting at the right time. Absolutely, the opportunities which now been given by the right infrastructure by the UP government covering the 4 states, Varanasi, Gorakhpur, Lucknow and Greater Noida wherein we have all that sports action which we are bringing at your television set. एक बार मेडल टैली पर नजर डाल लेते हैं कि कल के पूरे चहल पहल के बाद क्या रहा मेडल टैली और जैसे कि जैन यूनिवर्सिटी राइट एट द टॉप who have 6 gold 3 silver and 4 bronze. So कुल मिला के 13 मेडल उनके झोली में आ गए with the medals tally and Guru Nanak Dev University they are at number 2 with 4 gold 6 silver or they don't have a bronze but they have 10 medals in all and they are at number 2. और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे they have 3 gold and silver and 6 bronze medal
with in all 12 medals in all, and they're at number 3 on the medals tally. Moving on to the fourth is a Kurukshetra University, जैसे कि अभी हमने देखा when we talk about the women's kabaddi as well, और एक medal उनको मिला gold because of the women's kabaddi match, followed by 3 gold, 1 silver and 1 bronze respectively for the Kurukshetra University. And at number 5, it's the Christ University, the gold, silver and bronze. They have 3. They don't have any silver medal, but they have 1 bronze in their kitty. And with this, they have at number 5. तो ये हमने top 5 देखे. एक बार आपको दिखा देते हैं how this entire medal tally looks like. Let's take a look at the medal tally. So that's how the medal tally, the top 10 universities so far out of the 200 looks like, where we have Jain University at the top and SRM University at number 10. But with today's Sunday, will it turn out to be a super Sunday for so many? और towards the end of the day, रुपिंदर, हम देखेंगे उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी had dipped down to number 4, whereas Guru Nanak Dev University, Amritsar, they have risen up to number 2 slot. Correct. Difference एक ही गोल्ड का है, तो कोई फर्क नहीं है, कभी भी कोई जीत जाएगा. और इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी इन द इनिशियल स्टेजेस स्विमिंग इवेंट्स हो रहे हैं. स्विमिंग और एथलेटिक्स में मैक्सिमम मेडल्स होते हैं. तो Jain University dominates swimming. It added 1 gold medal from basketball and is right there on top. It will be interesting to see how the athletics, which starts from tomorrow, will turn the tables in favor of some other university. Absolutely. Raining of medals tomorrow, as we have the athletics event starting from tomorrow. But swimming will give a lot many medals today as well. So let's take a look at the schedule, that how does the Sunday looks out to be as from the sports action point of view. आइए नजर डालते हैं आज के schedule पे. So that's how at 9 AM we'll be having rowing, which has made a debut in the 3rd edition, और followed by 9 बजे ही आप देख सकते हैं swimming के events at SVSP Sports Complex, Greater Noida. 9:30 we'll be having the tennis action from Lucknow, और साथ साथ हम आपको wrestling के भी sneak peeks दिखाते रहेंगे from Varanasi. And then at 4 PM in the evening we have the football match men's category from Lucknow. So ये तो I think हमने आपके आधे संडे का ध्यान रख लिया है, where we have lots of action from swimming, from football and rowing as well. And they've done a very good job of scheduling. You notice the indoor games where the heat doesn't make a difference, they can start from the morning. And the outdoor games come later in the evening so that they don't feel the heat so much. So lovely. And today Gorakhpur rowing will be an interesting thing to see the Sagar in Gorakhpur and how the youngsters perform in rowing. Incidentally, rowing also India has won an Asian Games medal courtesy the services. But I would like the university boys to come up. You know, this event is about to begin. The starter has given his indication. We have 6 swimmers competing for this finals. And a good start from lane number 3. We will see how they fare in this 800 meters, like we saw yesterday in the men 1500 meter, the strategy, the build-up, but consistent performance by Anish Gowda yesterday. And it will be interesting to watch which one of them today is going to be the queen of endurance. और लेन नंबर 7 में इस समय मधुरा सबसे आगे चलती हुई विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी की 7 प्रतिभागी हैं 800 मीटर फ्री स्टाइल में महिलाओं के. और यहाँ पर अब रिटर्न करते हुए दीवार के साथ पैर लगाकर आप पुश कर सकते हैं, तेजी के साथ अपने आप को आप वापस ला सकते हैं. और 15 मीटर से ज़्यादा पानी के अंदर आप नहीं रह सकते जब आप शुरुआत करते हैं. और फ्रंट क्रॉल में तैराक सांस लेता है और बाजू देख रहे हैं आप, बाजू का एक एक्शन स्ट्रोक कहलाता है और दोनों बाजू स्ट्रोक साइकिल कहलाते हैं. स्ट्रोक साइकिल बनाकर इस समय लेन नंबर 2 में सबसे आगे चलती हुई लेन नंबर 2 में अनुमति अनिल चौगले और उसके साथ फिरदौस कायम खानी लेन नंबर 3 में. लेन नंबर 4 में प्रीता वी इस समय सबसे आगे रिटर्न करते हुए 100 मीटर के बाद शानदार तरीके से. And that's the turn for the first 100 meters. Preeta V of the University of Bangalore in the lead, but all the swimmers are keeping a trail on her. They're not letting loose. They are ensuring that the lead does not go too far, and that's the reason why we have the swimmers coming up with their own strategy. And as Kulwinder was mentioning, is the stroke rate, the distance per stroke, and the most crucial thing is the turn, how they are approaching the wall.
reaching out into underwater swim, and then that's the edge. Those little microsecond over a period of 800 meter can go a long way, and that's what the athletes are ensuring to get that slight advantage on every lap. And that's what you can see Preetha ensuring that. If you could see now, she's already gone ahead by a body and a half. और प्रीता वी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्वर्ण पदक जीता था। आज अगर वो यहाँ जीतती हैं, कम से कम 1.5 बॉडी लेंथ आगे चलती हुई लेन नंबर 4 में प्रीता वी आज अगर जीते तो उनका ये इस कंपटीशन का दूसरा स्वर्ण पदक होगा। रिटर्न किया शानदार तरीके से, आप दीवार पर पैर लगाकर आप रिटर्न कर सकते हैं। इस समय लेन नंबर 4 में सबसे आगे चलती हुई प्रीता वी जो कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी से है और ज़बरदस्त टक्कर देती हुई। हालांकि लेन नंबर 3 में फिरदौस कायम खानी है, लेन नंबर 2 में अनुमति और लेन नंबर 1 में वी वर्षा शुरुआत में अपनी दमखम को, अपने स्टेमिना को बचाकर रख रहे हैं, लेकिन बाद में अंतिम समय पर उनको जोर लगाना होगा। Oh yes, and Preetha V taken that lead by a considerable margin now as she is approaching the third 100. She is keeping that pace, she is maintaining that consistent movement, and you could see Kulwinder how in a smart way, that is what differentiates a top swimmer from the rest of the field, is that consistent movement, pacing, the count of the stroke on every lap, and this is what we get to see in this display. और जब ये 300 मीटर की ओर अप्रोच करती हुई इस समय प्रीता वी और आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैक कैप में प्रीता वी जिस तरीके से रिटर्न कर रहे हैं, दीवार पर पैर लगाकर मुड़ने को पुश करना कहते हैं और उसके बाद फ्लटर किक लगाई जाती है, बटरफ्लाई किया जाता है पानी के अंदर 15 मीटर तक, उसके बाद आप पानी से बाहर आती हैं। दोनों बाजुओं को रिकवरी में बाजू को रिलैक्स करना होता है, कंधे के जोर से हाथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींचने होते हैं और पुल मूवमेंट में कोनी हाथ से ऊपर होती है। तो ये कुछ तकनीकी बातें हैं इस कंपटीशन की। और लेन नंबर 4 में सबसे आगे चलती हुई, कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ कि 4 बॉडी लेंथ का अंतर प्रीता वी ने बना लिया है। प्रीता वी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था और आज एक बार फिर से स्वर्ण पदक की ओर बढ़ती हुई अपने 400 मीटर के आसपास पहुंचने के लिए रिटर्न कर चुकी हैं, जबकि इस तरफ आएंगी अब जिस तरफ बढ़ रही हैं, जैसे दीवार को पुश करके टच करेंगे 400 मीटर को, अपना दूरी को पूरा कर लेंगे और उसके बाद ये महिलाओं के 800 मीटर फ्री स्टाइल है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ पर शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत स्विमिंग पूल के ऊपर ये कंपटीशन होता हुआ तीसरे दिन का पहला सत्र और पहला इवेंट आपके सामने। प्रीता वी इस समय सबसे आगे, बहुत ज़्यादा दूरी बना लिया रिटर्न करते हुए प्रीता वी। ये देखिए किस तरीके से दीवार के साथ दोनों पैर लगाकर पुश करके आप फ्लटर किक लगाती हैं। पानी के अंदर आपको 15 मीटर तक की अनुमति होती है और उसके पीछे चलती हुई लेन नंबर 7, लेन नंबर 2 और लेन नंबर 3 में। क्या यहाँ पर इस कंपटीशन को, क्या प्रीता वी को कंपटीशन दे पाएंगी? लेन नंबर 7 में यशवनी सुहाग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, लेन नंबर 2 में अनुमति अनिल चौगले जो कि जैन यूनिवर्सिटी की है, लेन नंबर 3 में फिरदौस कायम खानी कोटा विश्वविद्यालय की कोशिश करती हुई। Preetha V with the margin of almost 20 meters lead is in a pole position right now, and she is gunning for another glory, another victory in this event. The closest second place is in lane number 7, Madhura BG, and followed by Firdosh Kaimkhani. But like I was just mentioning a while ago, just observe that stretch, just observe that extension of the arms and how is she pacing throughout that consistent leg movement, and that's why she is thus far ahead, almost by a 20-meter margin. And there you go, you see she is moving fast towards the glory with the 500-meter mark turn, and Preetha V is an inch by an inch in every lap. She is getting that extra edge, Kulwinder. आधे स्विमिंग पूल में पार कर चुकी थी अपने 600वें जो लैप उसकी तरफ बढ़ने के लिए। 550 हो जाएंगे जब वो टच करेंगे। कोई भी प्रतिभागी उसके आसपास नहीं थी। जब सभी प्रतिभागी यहाँ पर रिटर्न कर रही थी फ्लटर किक लगाकर, तब तक वो आधे स्विमिंग पूल को पार कर चुकी थी। प्रीता वी लेन नंबर 4 में काली
कैप लगाई हुई इस समय रिटर्न करती हुई सामने, और दीवार पर आप पैर से पुश करते हैं, दोनों हाथों को भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि कोहनियों को मोड़ना होता है, इंजरी का खतरा रहता है। लेकिन प्रीता वी ने जिस तरीके से अपनी बढ़त को बरकरार रखा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो यहाँ किसी को आसपास भी आने देंगी। अभी भी काफ़ी आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो अंतर बना लिया है, और अब अगर थोड़ा सा वो अपनी गति को कम भी करती हैं तो इस बड़े अंतर को पाट पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रीता वी इस समय पहुंचती हुई अपने 600 मीटर के लैप को पूरा करती हुई 800 मीटर का फ्री स्टाइल महिलाओं का, और प्रीता वी देखिए ब्लैक कैप में आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रिटर्न करते हुए खूबसूरत तरीके से। लेन जजेस तैयार अपने अपनी जगह पर उठकर देखते हैं कि हर प्रतिभागी टच करता है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी है। जो येलो पट्टी है उसके ऊपर टच करते ही ऑटोमेटिक टाइम दर्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैनुअल भी उसका हिसाब रखा जाता है। 7 लेन जजेज अपने अपने स्थान पर, जैसे उनकी लेन का कंपटीटर वहां तक पहुंचता है, प्रतिभागी वहां तक पहुंचता है, उठकर वो देखते हैं कि यह टच किया या नहीं। लेकिन प्रीता भी सबसे आगे चलती हुई इस समय 7वें लैप के अंदर 7वें लैप की शुरुआत कर चुकी है, आधा लैप हो चुका है। रिटर्न करते हुए प्रीता भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देखिए उल्टे होके पैर को लगाकर पुश किया बॉडी को, 15 मीटर तक फ्लटर किक लगाई पानी के अंदर, उसके बाद बाहर आकर दोनों बाजुओं को बारी बारी से साइकिल बनाते हुए, जिसको कि स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। It is impressive the way, Kulwinder, you're explaining the details of a swim stroke, and I'm sure our viewers in Hindi are getting an understanding of what a swimming stroke is like, with the arm cycle, the stroke cycle, the distance per stroke, and all those finer details, the technicalities. It just goes on to show, how good a student of sport you are. आखिरी जब लैप होता है, आखिरी एक चक्र बाकी है, उसके लिए बेल बजाई जाती है, घंटी बज चुकी है। प्रीता वी ने रिटर्न किया, घंटी बजी, ये घंटी प्रीता वी के लिए नहीं थी, बाकी प्रतिभागियों के लिए थी, खतरे की घंटी थी, बाकियों की घंटियां बज रही हैं, लेकिन प्रीता वा आधे पूल से सबसे आगे पहुंच चुकी हैं। स्वर्ण पदक के ऊपर उनका नाम लिखा जाना निश्चित है। अंतिम समय पर सभी प्रतिभागियों को जोर लगाना होगा। लेन नंबर 7 में इस समय मधुरा बीजी, लेन नंबर 2 में अनुमति अनिल, लेन नंबर 1 में भी वर्षा, और लेन नंबर 3 में कोटा विश्वविद्यालय की फिरदौस कायम खानी पूरी कोशिश करते हुए कि वो रजत पदक और कांस्य पदक पर अधिकार कर पाएं। यहाँ पर देखिए लेन नंबर 2 में अनुमति और लेन नंबर 3 में फिरदौस कायम खानी कोशिश कर रही हैं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। And as she reaches the last 25-meter mark, Preetha Wi is going in for her next gold medal in 800 meters. The first medal of day 3 will be in the name of Preetha Wi. It seems like she is just about to get there in last 5-meter mark. Look at that kick. Look at that finish. Look at that power demonstrated by this youngster from Bangalore University, finishing with the timing of 9 minutes 48.11 seconds. What a convincing performance, Kulwinder. और नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार प्रीता वी ने 10 मिनट 10.15 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आज उन्होंने 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया। ये उनका दूसरा स्वर्ण पदक है। दूसरे स्थान पर रही हैं अनिल चौगले, जो कि लेन नंबर 2 में थी जैन विश्वविद्यालय की। उन्होंने 10 मिनट 7.76 सेकंड के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और तीसरा स्थान मिला है इस समय मधुरा बीजी को, जो कि लेन नंबर 7 में थी। उन्होंने 10 मिनट 8.89 सेकंड के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। Yes, there you could see the champion, that feeling of jubilation, that feeling of triumph in the eyes of this champion swimmer, Preetha. आपकी स्क्रीन के ऊपर विजेता पहले स्थान पर प्रीता वी, दूसरे स्थान पर अनुमति अनिल चौगले, और तीसरे स्थान पर मधुरा बीजी। ये देखिए एक्शन रिप्ले में शुरुआत में ही प्रीता वी ने जबरदस्त तरीके से स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ उन्होंने छलांग लगाई थी, और जो एक दूरी, जो बढ़त उन्होंने शुरुआत में प्राप्त करी, उसके बाद किसी भी प्रतिभागी को आसपास नहीं फटकने दिया। लगभग आधे पूल का डिफरेंस हर समय रहा। तीसरे और चौथे लैप के बाद तो प्रीता वी की गति देखने वाली थी। अभी भी देखिए शुरुआत में प्रीता वी ने लेन नंबर 4 में
गति बनाई थी। ये रिटर्न किया खूबसूरत तरीके से। रिटर्न उनका बहुत बढ़िया होता है, दोनों पैर दीवार के साथ लगाकर पुश करते हैं। ये देखिए फ्लटर किक लगाई जाती है 15 मीटर तक पानी के अंदर, और उसके बाद फिर वापस लौटते हुए ये रिप्ले में देखिए किस तरीके से बाकी प्रतिभागी अभी पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन प्रीता वी ने जिस तरीके से रिटर्न किया, आधे पूल तक वो आगे रही। उसके बाद कोई भी मौका नहीं था किसी भी प्रतिभागी के लिए कि वो उनसे स्वर्ण पदक छीन सके। तो बेंगलोर विश्वविद्यालय की प्रीता वी ने अपने, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की। पिछली बार भी उन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। आज एक नए मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुपर स्लो मोशन में देखिए प्रीता वी आखिरी पलों में टच करती हुई केवल और केवल स्वर्ण पदक के लिए आसपास भी दूसरे खिलाड़ी नहीं। लेन नंबर 4 में प्रीता वी 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया, नया मीट रिकॉर्ड बनाया। दूसरा स्थान प्राप्त किया जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक की अनुमति अनिल चौगले ने। उन्होंने 10 मिनट 7.76 सेकंड के साथ रजत पदक जीता है, और यह भी एक नया मीट रिकॉर्ड है। और अब हमारे साथी भरत सचदेवा तैयार हैं बातचीत करने के लिए प्रीता वी के साथ। ओवर टू भरत सचदेवा। With me is Preeta Wee, the champion of 800-meter freestyle. Preeta is second gold medal of the meet. This meet is turning out to be a success. Good start to the year. How are you feeling it? I'm feeling pretty good. So my time has improved. I'm happy about it. And then focusing on other events more. What's coming up next for you after the Khelo India? After Khelo India, I'm not so sure. I'm still planning on other meets. So I'll have to see about it. Tell me about how has your university, Bangalore University, supported you throughout your journey as a swimmer, and how do you feel that college is playing that role to development? Bangalore University is giving a lot of support for me and for other events also, and our college has been very supportive. Like they make sure that I don't miss any classes. They teach me everything, so it's pretty good. Well, we are looking forward to many more laurels from you, and being the Asian Games here, are you ready for the qualifiers? I have to prepare. I still have to prepare. Well, all the very best. That was Preeta Wee from Bangalore University. Over to the commentary box. तो भरत सचदेवा बातचीत कर रहे थे प्रीता वी के साथ, जिन्होंने बताया था कि आगे अभी कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने के बाद निश्चित तौर पर अगले इसी स्विमिंग कंपटीशन में अगले मेडल की ओर वो बढ़ेंगी। आज के जो तीनों पदक यहाँ पर मिले हैं, तीनों पदक में नए मीट रिकॉर्ड बने हैं। गोल्ड मेडल में प्रीता वी ने पहला स्थान प्राप्त किया बेंगलोर यूनिवर्सिटी से 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रीता वी स्वर्ण पदक की ओर बढ़ती हुई। पिछली बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में 10 मिनट 10.15 सेकंड के साथ। दूसरा स्थान प्राप्त किया अनुमति अनिल चौगले ने, जो कि जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक से हैं, यानी कि दोनों ही शुरुआत के पदक कर्नाटक को गए हैं, और उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है 10.07.76 सेकंड के साथ। और पिछली बार 10 मिनट 13.67 सेकंड, यानी कि एक नया मीट रिकॉर्ड उनका भी बना, अपने रिकॉर्ड को उन्होंने सुधारा है। लेकिन अब तीसरा जो स्थान मिला है वो मधुरा बीजी को मिला है। मधुरा बीजी ने कांस्य पदक जीता है नए एक मीट रिकॉर्ड के साथ। उन्होंने 10 मिनट 8.89 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। पिछली बार कांस्य पदक मिला था अभिषिप्त पीएम को, जिन्होंने कि 10 मिनट 41.17 सेकंड के साथ जीता था। पुरुषों की 400 मीटर मेडले के लिए प्रतिभागी इस समय स्विमिंग पूल पर आते हुए। भरत, आपने जो बात की प्रीता वी से, क्या उनके उद्गार थे गोल्ड मेडल जीतने के बाद? Preeta looked very composed, confident, about her performance, and it's her second gold medal. And I was just talking to her, how has her university supported her in her preparation, which was very positive to hear that University of Bangalore is really putting a lot of work, detailing and time to support the athletes to do their best at the university games, which is what, is always a good sign, especially for the youngsters to get that support. And there you could see the lineup for the 400-meter freestyle individual medley for men. There you could see the swimmers lining up, representing Jain University Karnataka. In lane number 1 is Dhyan Balakrishna, representing University of Delhi. In lane number 2 is Samriddha Varmani. In lane number 3, representing University of Mumbai, Aryan Babasaheb Bhosle.
Lane number 4, representing Jain University, Karnataka, is Shiva Sridhar. लेन नंबर 5 में क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कल्प एस बोहरा। लेन नंबर 6 में अनीस गौड़ा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। लेन नंबर 7 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के अनुराग सिंह। और लेन नंबर 8 में वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के उत्सव दत्ता। और बात करना चाहेंगे, आज हम जिक्र करना चाहेंगे अनीस गौड़ा की, जिन्होंने कि अभी तक इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या आज भरत आपको लगता है कि वो चौथा स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं? It looks very much likely, Kulwinder, but keep your eyes on the middle lanes where we have Aryan, Shiva Sridhar, Kalp Bora, and of course, not to miss the champion, Anis Gowda. This will be a fight of the titans. We will see which one of them will prevail is the winner in the last 50 meters of this 400-meter individual medley. A race that tests the athlete's mental strength, character, and how he paces himself throughout, because all 4 strokes are on demonstration in the 400-meter individual medley. And as expected, from the middle lane, in lane number 4, Sridhar Shiva in the lead. But like I said, this is 8 laps of 2 or all 4 strokes to be demonstrated, Kulwinder. IM is one of the toughest event, and also it gives a stamping of a whole swimmer, complete swimmer to an individual. क्राइस्ट के शिवा श्रीधर लेन नंबर 4 में इस समय सबसे आगे चलते हुए। पहले 100 मीटर तक बटरफ्लाई, उसके बाद बैक स्ट्रोक, उसके बाद अगले 100 मीटर तक ब्रेस्ट स्ट्रोक और अंत में फ्री स्टाइल। ये इंडिविजुअल मेडले की कहानी होती है। और यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई में किस तरीके से सबसे आगे चलते हुए लेन नंबर 4 में शिवा श्रीधर ऑफ जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के स्विमर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। लेन नंबर 6 में उनका टक्कर देते हुए अनीस गौड़ा, जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के हैं। क्या अनीस गौड़ा स्वर्ण पदक पर अधिकार कर पाएंगे? ये उनका चौथा स्वर्ण पदक होगा अगर वो जीतते हैं कंपटीशन देते हुए। इस समय बैक स्ट्रोक चलता हुआ, बैक स्ट्रोक में अभी भी लीड बनाई हुई है शिवा श्रीधर ने, जो कि जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के हैं। कर्नाटका का बोलबाला है, बेंगलोर का बोलबाला है इस समय। अनीस गौड़ा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लेन नंबर 6 में, और कंपटीशन नेक टू नेक चलता हुआ शिवा श्रीधर और अनीस गौड़ा के बीच में। बात कर रहे थे कि अनीस गौड़ा ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, क्या आज अपने चौथे स्वर्ण पदक पर वो अधिकार कर सकते हैं? ये देखने वाली बात है। रिटर्न करते हुए खूबसूरत तरीके से ये बैक स्ट्रोक चलता हुआ, उसके बाद अगले 100 मीटर तक ब्रेस्ट स्ट्रोक होगा, फिर फ्री स्टाइल। Oh yes, and there you could see Shiva Sridhar still maintaining that body length lead, but like we saw yesterday, Anish Gowda has a knack of coming from behind and taking that, giving that knockout punch. We will see if that can be replicated today too, but they are 2 top swimmers of the country, Anish Gowda and Shiva Sridhar, moving into their breaststroke leg, and Shiva Sridhar still in the lead, testing their endurance, testing their strategy, testing their skill set. But as you can see, yellow caps in the front with Shiva Sridhar in lane number 4 and Anish Gowda in lane number 6, moving in slowly, steadily, keeping that pace, keeping an eye on their closest opponent, and not to forget lane number 4. Lane number 5, we have the swimmer Kalp Bora, who too is taking in that stride and that one minute by inch, getting closer to Anish Gowda in that breaststroke leg. Yeah, you could see, Kulwinder, how that in the middle, the black cap, Kalp Bora, the challenger, is coming in stronger, but still Shiva Sridhar in the pole position. शिवा श्रीधर लेन नंबर 4 में, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है जैन यूनिवर्सिटी के। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में उन्होंने 4 मिनट 38.98 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सिद्धांत सेजवाल को रजत पदक मिला था और जतिन बी को कांस्य पदक मिला था। आज यहां पर क्या शिवा श्रीधर अपने स्वर्ण पदक की रक्षा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। रिटर्न करते हुए और अब आखिर में फ्री स्टाइल 100 मीटर जो फ्री स्टाइल होगा उसमें बढ़त बनाई है, और ये मौका होता है कि फ्री स्टाइल में आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जो अंतर है उस अंतर को पार
लौट सकते हैं, लेकिन अभी भी शिवा श्रीधर सबसे आगे चलते हुए और उनके साथ बराबरी की टक्कर देते हुए लेन नंबर 5 और लेन नंबर 6 के प्रतिभागी, लेन नंबर 5 में अनीश गौड़ा, लेन नंबर 6 में अनीश गौड़ा, लेन नंबर 5 में कल्प एस बोहरा। नजदीकी मुकाबला, अनीश गौड़ा फिर भी कल्प बोहरा से थोड़ा आगे है। रिटर्न करते हुए आखिरी 50 मीटर के लिए शिवा श्रीधर, अपने डिफेंडिंग चैंपियन, लगातार इस कंपटीशन का दूसरा स्वर्ण पदक जीतने की ओर बढ़ते हुए सबसे आगे शिवा श्रीधर। And that's Shiva Sridhar in the lead in the last. He reaches the last 25 meter of this coveted 400 meter individual medal. Look at the pace, look at the speed, and what a convincing performance this has been so far by this champion swimmer from Christ University, Shiva Sridhar, winning the gold medal with a timing of 4 minutes 37.21 seconds, applauded by the spectators, and finishing in second. Representing Jain University is Anish Gowda of Christ University. In the first position, my apologies, Shiva Sridhar from Jain University. What a swim that was from this champion representing Jain University, Karnataka. Excellent swimmer. What a race that was, right till the very end. It was a close call, but Shiva Sridhar used that extra pedal to put the gas and march his way ahead in the last 50 meters of this 400 meters individual medley. What a finish that was. What a convincing performance by this youngster. The mindset, the strategy, the build-up, entire demeanor of an athlete comes on display, especially when they are under a situation like that, being challenged by the closest competitor. There we have Shiva, the crowd in big numbers. It's been really heartening to see the schools coming in with the students. And there you could see a quick recap of that last race before my fellow commentator Kulwinder Kang interviews the champion Shiva Sridhar and asks about his performance. There you could see back to back, moving, staying in the lead right from the start, and in the backstroke kept that steady lead. There he was getting challenged by Anish Gowda, but it was the breaststroke leg that proved crucial, and Shiva Sridhar took that extensive lead, giving himself that comfortable space and position to finish the race. And that's the last 50 meters where he went in strong. Shiva Sridhar, winner, winning with a margin. Over to my fellow commentator Kulwinder. तो इस समय मैं हूं शिवा श्रीधर के साथ, जो कि जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के हैं। शिवा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अपने गोल्ड मेडल की रक्षा करी, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे आप। हाँ सर, जैन के लिए रेस करना और इस बड़े स्टेज में रेस करना हमेशा एक प्लेजर होता है, और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। पिछली बार जो आपका समय था 4 मिनट 38.98 सेकंड, आज आपने उसको भी तोड़ा है, 4 मिनट 37.21। ये आपको पता था कि आपने नया मीट रिकॉर्ड बनाया है? हाँ, मुझे मैं टाइम देखा और मुझे पता चला, पर मैं एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं 400 के लिए इतना ट्रेन नहीं किया था। पर रेस बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुशी हूँ टाइम देख के। अनीश गौड़ा और कल्प बोहरा आपके पीछे पीछे चल रहे थे, आपकी नज़र उन पर थी? हाँ, एक्चुअली मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, मैं उनके साथ ट्रेन भी करता हूँ। दे वेरी गुड जूनियर्स, राइजिंग स्टार्स। नेक्स्ट खेलो इंडिया में भी वो होंगे, मेरा ये लास्ट यूनिवर्सिटी मीट है, तो इट वॉज़ वेरी नाइस टू रेस विद देम। और मैं उनको देख रहा था और मैं थोड़ा स्ट्रैटेजाइज किया कि तो बैक एंड में थोड़ा स्पीड लगवाऊंगा, तो अच्छा हुआ रेस। फ्यूचर का आपके क्या प्लान है? फ्यूचर में लाइक आई सेड, दिस इज़ माय लास्ट यूनिवर्सिटी गेम्स, पर ये मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है एशियन गेम्स के लिए, एशियन गेम्स ट्रायल्स के लिए तैयारियां करने के लिए। और हाँ, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, हम सीनियर लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि जूनियर्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू रेस। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे शिवा श्रीधर, जिन्होंने कि आज 400 मीटर मेडले में स्वर्ण पदक जीता है। बैक टू भरत सचदेवा। And that was my fellow commentator Kulwinder interviewing
interviewing Shiva Sridhar. There you could see the recap of that final dash made by Shiva Sridhar and winning that with the record margin, and in process making a new meet record. Shiva Sridhar there for you. And we have a big Super Sunday coming up with some exciting lineup of events in the morning as well as in the evening session. The dignitaries, the spectators are coming in, slowly coming in to fill the space and witness this spectacle at the Khelo India University Games. And my fellow commentator Kulwinder, who has just interviewed Shiva Sridhar. Kulwinder, please tell me, what was in the mind of Shiva Sridhar? He went for his best time, and this time you could see there was a smile, there was a satisfaction in his heart. आपकी शरारतें कम नहीं होती। 10 फीट ऊपर आया हूं मैं सीढ़ियां चढ़ के, आपने आते ही सवाल दाग दिया, लेकिन सवाल आपका अच्छा है। शिवा श्रीधर ने ये कहा कि हम सीनियर्स को भी मौका मिल रहा है और यहाँ कमेंट्री में भी सीनियर्स को मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनका ये था कि हम इस कंपटीशन में, मेरे साथ अनीस गौड़ा भी थे, कल बोहरा भी थे, उनके ऊपर मेरी नज़रें ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि मैं इसमें इतना ज़्यादा करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक नए मीट रिकॉर्ड के साथ बनाया। और उन्होंने कहा पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने टाइमिंग देखा 4 मिनट 37.21 सेकंड के साथ, तो मुझे खुद को एहसास हुआ कि ये एक नया मीट रिकॉर्ड बना है। और अब आगे महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो तैराक हैं, वो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए। तो ये आज का तीसरे दिन का पहले सत्र की ये तीसरे इवेंट होगा, वो होगा महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई। Thank you. I can see your pulse has come down, Kulwinder. देखिए ऐसे है, सांसें तो चलती रहनी चाहिए, चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो आप भी कोई ज़्यादा बच्चे छोटे नहीं हैं, आपको भी मैंने सांस फूला हुआ देखा था कल। Well, it's all honoring our counterparts, the privileged ones, but here we are witnessing the girls 200 meter butterfly event, third final of the morning, and we have an exciting lineup with the girls. And there you could see the lineup in front of you. लेन नंबर 1 में परमार विश्व आत्मीय विश्वविद्यालय से, लेन नंबर 2 में सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने कल स्वर्ण पदक जीता था जादवपुर यूनिवर्सिटी से, लेन नंबर 3 में इस समय है उत्तरा गोगोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की और असम की रहने वाली हैं। लेन नंबर 4 में कोटा विश्वविद्यालय की फिरदौस कायम खानी, लेन नंबर 5 में सार्वजनिक विश्वविद्यालय की कल्याणी अजय सक्सेना, लेन नंबर 6 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की आभा शशांक देश पांडे, लेन नंबर 7 में श्रुति सुनील गौडसे जो कि भारतीय विद्यापीठ से हैं, और लेन नंबर 8 में निर्मा यूनिवर्सिटी की सुचेत्रा चक्रवर्ती। तो ये आपके सामने हैं जो पार्टिसिपेंट हैं, और ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। And the swimmers are ready to hear the signage, the signal from the referee, the starter of the meet, preparing themselves for that last few seconds of that mentally, emotionally, physically getting up. That's on your screen, Firdosh Kayam Khani of University of Kota. With that focus, with that determination, we will see which one of these top athletes will prevail in this 4-lap butterfly event. And a good start from lane 2 and lane 3. Srishti Upadhyay and Uttara Gogai in the lead. Moving in the first 25. Exciting race, exciting lineup, testing their endurance, testing their mental and physical strength. This will be an interesting watch. Uttara Gogai won her silver medal yesterday by losing by just a heartbeat, but it will be interesting how she fares up in this 200-meter event. Both events offering a different set of characteristics. Both events testing the individual, one for the sprint and another one
with their endurance. And in lane number 3, in the lead is Uttar Gogoi of University of Delhi. और लेन नंबर 5 में कल्याणी सक्सेना जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछली बार कल्याणी ने 2 मिनट 31.98 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आज थोड़ा सा पिछड़ते हुए, लेकिन इस समय लेन नंबर बात की जाए 4 और 5 बराबरी की टक्कर चलती हुई। क्या यहाँ पर महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई में किसी भी तरीके से आज एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, नया कीर्तिमान बन सकता है? लेन नंबर 3 में उत्तरा गोगोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, कल भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। आज अभी तक लीड बनाई हुई, सबसे आगे चलती हुई और उसके साथ टक्कर देती हुई लेन नंबर 5 और 6। Yes, the lead is still intact by Uttar Gogoi of University of Delhi, hailing from Assam. And it will be interesting to see how she fares up in the last 50 meters. She touches the wall, moving in with a fast underwater touch. There you can see, moving in faster from lane number 2, Srishti Upadhyay, putting up the pedal, pressing the gas and moving in that last 25-meter mark. It will be interesting to watch Srishti Upadhyay versus Uttar Gogoi. This is where it all comes down to. This is all where it all boils down to. And the swimmers are going in for the last 10-meter mark. And Srishti Upadhyay, it seems like, going in stronger with Uttar Gogoi. And lane number 5, Kalyani Saxena in the 2nd and 3rd position. What a swim that was, with a timing of 2 minutes 30.11 seconds. लेन नंबर 2 में श्रेष्ठी उपाध्याय ने 2 मिनट 30.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार किया है। ये एक नया मीटर रिकॉर्ड बना है। पिछली बार कल्याणी सक्सेना जीती थी। दूसरा स्थान प्राप्त किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की उत्तरा गोगोई ने, जिन्होंने कि 2 मिनट 31.82 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की फिरदौस कायम खानी ने। उनका समय रहा 2 मिनट 33.21 सेकंड। तो इस तरीके से लेन नंबर 2, लेन नंबर 3 और लेन नंबर 4 के जो प्रतिभागी थे, सृष्टि उपाध्याय, उत्तरा गोगोई और कायम खानी फिरदौस, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ये थी महिलाओं की 800 मीटर बटरफ्लाई। आपकी स्क्रीन के ऊपर सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने कल भी स्वर्ण पदक जीता था और आज ये देखिए एक बार फिर से खुशी मनाते हुए। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से शुरुआत से थोड़ा पिछड़ी थी सृष्टि उपाध्याय, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने इस समय को अपने नियंत्रण में किया और सबको पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक पर अधिकार किया। डिफेंडिंग चैंपियन कल्याणी सक्सेना थी, जो कि आज यहां पर चौथे स्थान पर रही हैं। कल्याणी सक्सेना का समय 2 मिनट 33.90 सेकंड रहा। ये उन्होंने पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया। पिछली बार स्वर्ण पदक जीता था, आज चौथे स्थान पर रही। आपकी स्क्रीन पर लेन नंबर 2 में सृष्टि उपाध्याय, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, 2 मिनट 30.11 सेकंड के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक पर अधिकार किया है। और सुपर स्लो मोशन में आप देखिए कि किस तरीके से सृष्टि उपाध्याय फर्स्ट आई, सेकंड स्थान पर रही उत्तरा गोगोई और तीसरे स्थान पर रही फिरदौस कायम खानी। उत्तरा गोगोई का समय 2 मिनट 31.82 सेकंड और कायम खानी का 2 मिनट 33.21 समय रहा। ये जजेज जो कि इस प्रतियोगिता को कंट्रोल करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, उत्तरा गोगोई जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन असम की रहने वाली हैं, उन्होंने आज रजत पदक जीता है और कांस्य पदक मिला फिरदौस कायम खानी कोटा यूनिवर्सिटी को। लेकिन स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया जादवपुर विश्वविद्यालय की सृष्टि उपाध्याय ने। अब हमारे साथी भरत सचदेवा गए हैं बातचीत करने के लिए विजेता के साथ। ओवर टू भरत सचदेवा। With me is Srishti Upadhyay of Jadavpur University, the winner of 200-meter butterfly. Srishti, what a final 25 that was. Was it all planned? Did you have any strategy or just happened? 200 fly is all about strategy. I started slow, but then gradually I built it up. So yeah, it was. And
That was a good close fight again this time against Uttara. You know, yesterday also you girls were like all out, like a knockout punch. Again today was the same thing. Did your coach tell you something regarding the race, or there was a build up towards this? Yesterday she was in lane 6 and I was in lane 3, so there was no like, I had no idea where was she. Today she was just beside me, so I could make it out where is she. And till 100 I was pretty close to her, then I built it up so I could catch up. Well, you really raised the morale of Jadavpur University. Tell me, how has the university shaped you up, supported you into your preparation? So I am training in Odisha and my university is in Kolkata. So they have been a great support. I don't even go to university. I just study online and get the exams, so they have supported a lot and given all the guidance to me. Well, that's Srishti Upadhyay for you, the champion swimmer in 200-meter butterfly. And Srishti, we hope to see you in many more laurels. Thank you very much. Over to the commentary box. तो ये थे भरत सचदेवा जो बातचीत कर रहे थे विजेता सृष्टि उपाध्याय के साथ। हम ये भी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि एक साल पहले जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुए थे, वहां पर सृष्टि उपाध्याय ने कांस्य पदक जीता था 2 मिनट 41.07 सेकंड के साथ, लेकिन आज उन्होंने 2 मिनट 30.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया। मेरे साथी भरत सचदेवा, कल भी उन्होंने उनसे बातचीत की थी, आज भी बातचीत करके आए। देखते हैं कि उनकी सांसें कितनी ऊंची नीची है। भरत सचदेवा। Kulwinder, it's a reflection of another person, you know, when the conditioning and the breath is all relative. आप तैराक रहे हो ना, इस वजह से आप कंट्रोल कर लेते हो। So that's a water element. And there you could see the replay of that final touch by Srishti Upadhyay, who I just interviewed and asked her about her strategy in the last 25. And she said, yes, she was preparing for that last effort that she had calculated before finishing the wall and trouncing her closest competitor Uttara in that final touches. But that is what really separates the champion swimmers. And we have a lineup of the next event. पुरुषों की 4 गुना 100 मीटर मेडले, जिसमें लेन नंबर 1 में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, लेन नंबर 2 में होंगे मद्रास विश्वविद्यालय, लेन नंबर 3 में पंजाब विश्वविद्यालय, लेन नंबर 4 में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, लेन नंबर 5 में अन्ना यूनिवर्सिटी, ये पोल पोजीशन पर रहेंगे। लेन नंबर 6 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कोट्टायम केरला, लेन नंबर 7 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, और लेन नंबर 8 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रतिभागी अपने गंतव्य स्थान की ओर और लेन जजेस के सामने से निकलते हुए, और आज का ये सुबह के सत्र का आखिरी ये मुकाबला है, और उसके बाद शाम के सत्र में प्रतियोगिताएं होंगी। आज ये तीसरा दिन है, अभी तक 3 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले महिलाओं के 800 मीटर फ्री स्टाइल, जिसमें स्वर्ण पदक जीता प्रीथा वी ने 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ। उसके बाद पुरुषों की 400 मीटर मेडले, जिसमें स्वर्ण पदक जीता शिवा सिरधर ने नए मीट रिकॉर्ड के साथ, और उनका समय था 4 मिनट 37.21 सेकंड। और तीसरा जो कंपटीशन था वो था महिलाओं के 200 मीटर बटरफ्लाई, जिसमें अभी अभी सृष्टि उपाध्याय ने स्वर्ण पदक जीता, और भरत सचदेवा ने उनसे बातचीत की और उनका समय था 2 मिनट 30.11 सेकंड। और अब आज की आखिरी प्रतियोगिता आपके सामने, ये लाइनअप स्क्रीन के ऊपर 4 गुना 100 मीटर मेडले का। For into 100 meter medley relay, the last event of the morning finals. We have a crash between the titans. You could see the swimmers warming up, jumping up and down, preparing for that extra edge from the beginning. This is a race, a relay where 4 members of each team swim, and they swim all 4 strokes, starting with backstroke, breast, butter and free. And there you could see the champion athletes are getting up, are getting ready to breast. चार गुना 100 मीटर मेडले में
पिछली बार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसमें अन्ना विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया था, जैन दूसरे पर और अडमास यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही थी। ऑन योर मार्क, और इसके साथ ही ये शुरू होता हुआ मेडले रिले, जिसमें सबसे पहले बैक स्ट्रोक, उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर बटरफ्लाई और उसके बाद फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन होता है। और इंडिविजुअल मेडले में थोड़ा अंतर होता है, उसमें पहले बटरफ्लाई होता है, उसके बाद बैक स्ट्रोक, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल आखिर में क्यों रखा जाता है भरत, ताकि समय को पूरा कर सके? Well, being the anchor leg, they want to keep the fastest swim in the end. So that's why freestyle, and also it generates more excitement, you know, when the top swimmers are getting up for it. And like you said, it's the starting with backstroke, and then now the next swimmer getting ready, the breaststroker of that leg is preparing himself to jump and give that team the extra edge. And in the pole position, in the lead, we have Anna University with Jain University in the lead, and closest fighting second is Anna University in lane number 5. Shiva Sridhar giving that his team that extra edge. The Jain University in the pole position, and you can see Anna University breaststroker taking that lead. And not to forget, we have the champion Rohit Benediction, who had just touched the wall in backstroke leg. Breaststroke is the crucial leg in this medley relay, and it'll be interesting to watch in that last 50 of the breaststroke leg which one of these top swimmers take that edge. और लेन नंबर 4 में जैन यूनिवर्सिटी के शिवा सिरदर वापस आते हुए, लेन नंबर 5 में अन्ना यूनिवर्सिटी के सुकेश केएस उनको बराबर की टक्कर देते हुए सफ़ेद कैप में आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। सबसे आगे चलते हुए शिवा श्रीधर, जो कि इस समय ब्रेस्ट स्ट्रोक में प्रतिभागी के तौर पर उन्होंने छलांग लगाई थी, उसके बाद बटरफ्लाई और फिर फ्री स्टाइल। And there we have the butterflyer of Anna University taking that leap in the water. We will see if he can sustain the lead. We will see if he can maintain and give his team that lead towards the end to the anchor leg. And in the first and the second is Anna University and Jain University Karnataka. The swimmers are looking sharp. The swimmers are going in for the last 50 meter in the butterfly leg, going in strong. Look at an underwater swim by the swimmer of Jain University, who is trying to make that comeback, catching up on his closest competitor. Both the swimmers going neck to neck. It will be interesting to see in the last 20 meters which one of them will prevail and give their team that extra edge, that lead into the anchor leg. Both the swimmers are looking strong and may jump together. What a jump, what a bounce that was. और आखिरी 100 मीटर के लिए जो छलांग लगाई गई है फ्री स्टाइल के लिए जैन यूनिवर्सिटी की तरफ से इस समय शुभ्रांत पात्रा और अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से बेन हेनन के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला होता हुआ लेन नंबर 4 एंड लेन नंबर 5। और पिछली बार अन्ना यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीता था, जैन यूनिवर्सिटी को रजत पदक मिला था और कांस्य पदक पर अधिकार किया था एडमास यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के लेन नंबर 3 में इस समय सिद्धांत सेजवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अभी आप देखें लेन नंबर 4 लेन नंबर 5 के अंदर जबरदस्त कंपटीशन होता हुआ। लेन नंबर 4 में येलो कैप के अंदर सबसे आगे, and that's the last 15 meters of this mouth-watering clash. There you could see Jain University in the yellow cap, Anna University in the white, both the swimmers going in strong. What a finish that was, a cracker of a race, and the victory by Anna University in lane number 5. What a swim. What a competitive Anna University, coming second. Jain University winning the by just a slight margin in the yellow cap in lane number 4. That's the swimmer of Jain University finishing in strong in that anchor leg. What a swim. What a fight that was. The battle of grit. And there you could see, ultimately, it is the Jain University winning their gold in 4 into 100 meter medley relay men. What a swim that was. Exhilarating performance.
जैन यूनिवर्सिटी, आपके स्क्रीन के ऊपर विजेता अन्ना यूनिवर्सिटी जैन यूनिवर्सिटी के सुभ्रांत पात्रा। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार जैन यूनिवर्सिटी ने रजत पदक जीता था 3 मिनट 56.56 सेकंड के साथ। नया मीटर रिकॉर्ड तो नहीं बना। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से शुरुआत हुई थी, जबरदस्त। सबसे पहले बैक स्ट्रोक होता है मेडले रिले में, उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर बटरफ्लाई और फिर फ्री स्टाइल। तो आज पहला स्थान प्राप्त किया है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने 4 मिनट 0.07 सेकंड के साथ। दूसरा स्थान मिला है अन्ना यूनिवर्सिटी को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी। उनका समय रहा 4 मिनट 0.31 सेकंड। और तीसरा स्थान मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, जिन्होंने 4 मिनट 3.54 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता है। ये देखिए किस तरीके से लगातार कंपटीशन होता हुआ ये आखिरी लेग फ्री स्टाइल की, और इसमें जो रिटर्न किया गया उसके बाद जो समय निकाला गया वो देखने लायक था। फ्री स्टाइल में ये देखिए बढ़त बनाई हुई येलो कैप में, आप नजदीक देखिए, स्लो मोशन में देखिए, नेक टू नेक था, लेकिन येलो कैप में अन्ना जैन यूनिवर्सिटी के तैराक ने बाजी मारी। दूसरे स्थान पर रही अन्ना यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। इन चारों प्रतिभागियों के साथ हम डीडी स्पोर्ट्स पर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथी भरत सचदेवा अब खिलाड़ियों के पास पहुंच रहे हैं। तो ये आज का पहले सत्र का ये आखिरी इवेंट था। 4 इवेंट होते हैं। सुबह सबसे पहले महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल, जिसका स्वर्ण पदक जीता प्रीता वी ने 9 मिनट 48.11 सेकंड के साथ। उसके बाद पुरुषों की 400 मीटर मेडले, जिसमें शिवा श्रीधर ने नए मीटर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता 4 मिनट 37.21 सेकंड के साथ। और तीसरा महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई में सृष्टि उपाध्याय ने 2 मिनट 30.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। और अब आज का पहले सत्र का ये चौथा इवेंट था पुरुषों की 4 गुना 100 मीटर मेडले, जिसमें कि जैन यूनिवर्सिटी ने 4 मिनट 0.07 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया है। तो जबरदस्त कंपटीशन आज यहाँ पर देखने को मिले, जबरदस्त कंपटीशन। और आज का ये आखिरी मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेन जजेज वापस अब अपने स्थान की ओर जाते हुए शाम के इवेंट जो कि 4:30 बजे होंगे उसकी तैयारी के लिए। दर्शक बहुत बड़ी तादाद में, और आज रविवार का दिन है, इस वजह से भी काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। स्क्रीन पर आप देखिए स्टूडेंट्स हैं, युवा तैराक हैं, जो कुछ सीखने के लिए आते हैं, अपने आइडियल को देखने के लिए आते हैं। ओवर टू भरत सचदेवा। All right, I have with me the winners in 400 meter medley relay, Jain University swimmers over here. And you gave them a great lead, Shiva, in backstroke. Did you feel any challenge coming from Anna University, or were you sure that my team will take it? No, actually, to be honest, on paper, we were definitely, I feel like silver would have been a thing we could have settled for happily, because in the University Nationals, back in University Nationals, we had Hari, and we still got the silver against Anna University. So I'm really, really proud of these boys for putting everything. And me and Dhyan actually swam this race after the 400 IM. So I'm really, really happy with all their efforts. Well, you already gave the team that much needed impetus and the motivation by winning 400 meter IM. Congratulations for that also. But you went breaststroke after Shiva touched the wall. What was going on in your head? Just I want to finish first, that's all. I want my college has to win, that's all. I don't want anything. I mean, my mind was really completely blank. The last 50 was like a little bit tired for me. Because first year, and this one is my. So, this year, first year is this. Well, you did a great. Thank you. Thank you, sir. Butterfly leg swam by you, and I think it was really crucial to give your teammate the lead. What was the strategy? My strategy, I was just saw a little bit we were getting close to second, but I tried to feel like I got a little fired up way. Just try to go like a blown and faster. Well, you showed that, and the last leg, I think that start was crucial. You were very smart to get that quick start. Were you planning that the guy will be catching with me in the last 50?
Yes. Actually, because the 400 am really had a big toll on me, and the goal was to come back really hard and get the wall first. And I think we achieved that, honestly. And it was not only me, it was thanks to the boys keeping up with the Anna team that I was able to finish ahead of them. And finally, yeah, it's a group effort, honestly, and everybody needs to get the laurels for it. Well, that is Jain University, the champions in 4 into 100 meter medley relay. Guys, you really raised the bar high for your university. I'm sure it's a day of celebration. Second last day, enjoy the competition, and I hope you're enjoying the proceedings at this majestic complex. Yes, we love it. Like I said, I think the first Khelo India which is happening in an indoor facility, and everything has been good. I think Noida has been treating us really well. So yeah, we're really happy to come and swim here. Wonderful. We look forward to have many more events from you guys. That was Jain University swimmers. Over to the commentary box. Thank you very much. तो इस तरीके से अभी बातचीत कर रहे थे भरत सचदेवा, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के स्वर्ण पदक विजेता टीम के साथ, जिसमें ध्यान बालाकृष्ण, मणिकांता, सुब्रंत पात्रा जिस तरीके से स्वर्ण पदक जीता 4 मिनट 0.07 सेकंड के साथ। आज के पहले सत्र के चारों इवेंट अब समाप्ति की ओर हैं। शाम को 4:30 बजे हम दूसरे सत्र की कंपटीशन लेकर डीडी स्पोर्ट्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। आगे दीजिए, नमस्कार। And getting his 4th gold medal. And then, of course, it culminated with the individual medley in which there was such a close contest between Jain and Anna University. In between the two women who excelled, Shrishti Upadhyaya from Bardhaman University and Varsha, who excelled in the long distance, 800 meters, 16 lengths of the pool, totally dominated in what they call the loneliness of the long distance swimmer. Absolutely. You know, when we talk about swimming as an event, swimming as a game, altogether the medium is water. So I was talking to Rupinder about that. What do you need the most? Your stamina, at the same time how you apply your brains at the same time. You have to keep a watch on the competitor as well. So when you are into that swimming, you know, when we talk about that challenge or that competition, how do you remain stable at the same time you have to show your aggression as well? Yes, in fact Shrishti Upadhyaya in an interview explained that very well. She said in an earlier race my competitor was far away and I had no idea, but in this race she was just next to me, and it was a 200-meter butterfly. She said I had my race plan ready till 100 meters butterfly. I will be with her. After that, to hell to her, I am going all out. I think this is a mantra for, I would say, for everything in life rather. Absolutely. But another strange one came to me from Carl Lewis. I used to tell him, you line up for your final in the 100 meters. There are 7 more competitors equally good. How do you manage to control your emotions? And he said, Rupinder, for me, it's me and my lane. I don't know about anyone else. And I run my race to perfection, and if I win. But I think that's altogether a different school of thought probably. Absolutely. You know? When you focus your strategy, your planning, you have to fight against your power and then finally grab that medal. But as far as the swimming is concerned, yesterday too there were 10 medal events, and when we talk about those 10 medals, how amazingly when we talk about those 10 medals, और swimming एक ऐसी स्पर्धा है जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं, अनीश गौड़ा from Christ University taking that gold, Arun Panchal and Shuprant Patra again taking that bronze. And how, when we talk about swimming as an event, it's very interesting for the spectators as well. Absolutely, very interesting. And the other good thing is, like we are talking about, Amish has 3 gold medals, 2 silvers, 1 bronze. Sivasri has 4 gold medals. Michael Phelps in Olympics had 8 gold medals in 1 Olympics. So this is the beauty of swimming. It allows a person to compete in many events. This is not so easy in the track in athletics. Normally you do a 100, 200 or a 400, 800 or a 1500 and 5000. So it's much more difficult on the track. But swimming, that's the beauty. It allows one individual to totally dominate and compete in
many events. Absolutely. So you need the right mantra, the right application, and of course you need to showcase the best of your talent. बढ़ते हैं आगे when we talk about swimming men's 200 meter butterfly result जो कि कल आया, where Anish Gowda, जो कि we were talking about Anish as well, who took the gold, Aryan got the silver, and Shubharant Patra from Jain University got the bronze. So can we say swimming has overall evolved as far as Indian contingent is concerned? Absolutely, swimming needs to evolve, and it is evolving, and we are getting closer and closer to international standards. Are we? And people are reaching the semi-finals and finals of event. I remember the last time we won a gold was, I think, 86 Khajan Singh Tokus, and then there was one more in 2006 or 2010. I forget the name, Khade, Vishwanath Khade. So we've had long and in between gaps, but now it is improving. The hopes are rising. And one test will come for the swimmers in the Asian Games later this year in September, where they will be upper class, world class swimmers from China, Korea and Japan. They are absolutely brilliant. So it makes it that much more difficult for the swimmers, because normally what happens is some events have lesser competition at the Asian Games, so people get a chance to become stars, and it's difficult at the Olympics, but with them it's difficult right from the word go. Absolutely. And you know, we have seen that power when we talk about the wrestlers and the shooters and the boxers. India still have, you know, a good control over these sports events when we say. So are we seeing swimming in that league? Not yet. I hope so. Athletics and swimming are the two events which give 42 medals each at the Olympics and the Asian Games and the Commonwealth Games. This is where India is lacking. In athletics, in 75 years, we've had only one gold medal, courtesy Neeraj Chopra, the golden boy of India, and in swimming, we've had none. So that's where I feel we have underutilized our potential. So we have the potential, we have the right power, but all we need is the right application. So to talk about swimming, let's take a look at the other results. Swimming men 4 in 200 meter freestyle, where Sukesh from Anna University took the gold. Again, the Shubharant Patra from Jain University took the silver, and bronze went into the favor of Priyanshu, who was from University of Delhi. And again, it was such a competitive, you see the result, 339, 340. और you know, these results, you know, they keep coming on your television screen और एक तरीके से आपको याद दिलाते हैं कि आपको ऐसे परफॉर्म करना, और हम देख पा रहे हैं when we talk about फिरदौश और राजश्री पे भी देखो 5.8 and 5.2. So बहुत ही close contention रहा, but कल्याणी सिंह right behind 5.27 for the bronze. 400 meters individual medley, perfect performance by the girl from University of Kota. बिल्कुल. And you know, when we talk about this 4 in 200, you know, अभी हमने श्रीधर का भी देखा, with what finesse they perform. We were talking कि they have to show butterfly stroke as well and the breaststroke as well. Freestyle, of course, they have to show. तो बहुत मुश्किल हो जाता है. The individual medley is like an all-round swimming test. You start with a butterfly, you go into the backstroke for the next 100 meters, then the breaststroke for the next, and then you finish with the easiest of them, the freestyle. So we'll be talking about the Sridhar's, you know, so many feathers in his cap. नजर डालते हैं अगले results पर, which is again from swimming women's 400 meter medley results. Firdosh Kayam Khani from University of Kota took the gold. Rajashri Bandekar got another medal, the silver medal, who's from Jain University, and Kalyani Saxena from Sarvajanik University took the bronze. And swimming men's 1500 meter freestyle result, Anish Gowda, Christ University. Anurag Singh from University of Delhi took the silver, and bronze went to Dhyan Balakrishna, who's from Jain University, Karnataka. Anish Gowda, easily the best endurance swimmer, 400, 800, 1500, always in his name. All right, so moving on to the next results. We have Chahat Arora from Punjab University under swimming women's 50 meter breaststroke, who took the gold with an amazing timings, followed by Aarti Patil from University of Mumbai, took the silver, and another Patil, Jyoti Patil from the same university, got the bronze. So another great performance by Chahat there. And we have Rohit. We were talking about Rohit, how he's coming up and he'll turn out to be the new star towards the end of the university, just like many more other stars.
For the category swimming men's 50-meter butterfly, it's Rohit from Anna University took the gold. Silver went to Pratham Sharma from University of Delhi, and Shiva Sridhar, Jain University, took the bronze. So the student Rohit benediction beating his master Shiva Sridhar. So Shiva Sridhar, now 4 all in all he has? He has 4 gold medals 4 and gold, 1 bronze. Yeah. So, you know, when you're performing like this, it's not the, you know, we would say, it's just the expectation of your teachers, your parents. खुद की आपसे उम्मीदें जग जाती. It's about your own expectation. You have to stand tall to that. Exactly. And they are now used to international competition, so they must be finding the university games as something where they can shine and prove themselves as great all-rounders of swimming, great ambassadors for the Jain University and great ambassadors for Indian universities. So this is the essence of, you know, when we have the university games at the right age, you need the right training so that you can showcase to the world your power, your stamina, your talent. तो आगे नजर डालते हैं आगे रिजल्ट्स पर. So now the last in the league, it's swimming women's 50-meter butterfly. Again, Shrishti Upadhyay from Jadavpur University took the gold. Uttara Gogai from Delhi University took the silver, and Priyanka from the University of Madras took the bronze. And this is the race where Shrishti was explaining. Against Uttara Gogai in another race, they were far apart. She had no idea. But here, they were in the next lanes. And she could plan her 200-meter butterfly. And look at the result. They were narrowly there. So, just like in the men, we are having Amish versus Siva. We are having Shrishti versus Uttara in the women. So, what do you prefer? Keeping close your contender or just focusing on your strategy, your planning and your performance? What happens is there are two kinds of people, but normally when you go into a competition, then the idea is to win, not the timing. And that is what Shrishti explained she was doing. She was looking at Uttara, planning according to that, 100 meters butterfly, be with her, then go all out. So that's what happens, and it's very difficult to really do well in terms of a good timing as well as winning. This is exemplified by when you have the Olympics, you never see a world record. World record comes in Grand Prix meets where they have a pacemaker and small things like that. In fact, the last world record broken was won in the Olympics, the pole vault in the final event in the Tokyo Olympics. All these statistics do add on to the pressure. Like, had I knew I have to break a world record, will I be able to showcase the best of my performance? Yeah, this means total dominance. This means total confidence. It happened in a running event in 2012 at the London Olympics. Daniel Rudisha of Kenya led from the start to the finish, a 2-lap race. Normally people compete, like Shrishti was saying, take the first 400 slowly, then go up. Daniel from the first step to the last step ran all out. He had so much confidence and he set the world record, which still stands till today. So I think to each to its own, you know, probably yes, it's how you perceive, how you perform. All in all, you need to win or you need to participate. I think all in all, you need to win first. After you have won, then you can aim for the record. It's like saying win one event before you go to many more events. Like Shiva Sridhar might have had a speciality. So in his first time, he won 1. Then he went on to 2, 3, 4. As the confidence gains, you go on increasing. You go on increase, and that confidence has been showcased by Jain University as well, who's there right at the top. और अभी भी हमने देखा शिवा श्रीधर जिनकी बात कर रहे थे, he took 4 gold and 1 bronze in this 3rd edition of the Khelo India Games, and is continuing his talent. और जैन यूनिवर्सिटी दे सिटिंग राइट एट द टॉप बाय ग्रैबिंग द मेडल्स. और इसी तरीके से स्विमिंग की इवेंट्स ना केवल कल हमने देखी, अगेन इट्स अ रीप्ले फॉर ऑल आवर व्यूअर्स वेयरइन दे कैन कैच द ग्लिम्स ऑफ हाउ अमेजिंगली दिस शिवा श्रीधर हैज परफॉर्म्ड. Rupinder. Yes, I think this is the individual, not the individual, this is the medley relay. The first one was a backstroke. The next one is a breaststroke. And look at that competition. Anna University in Jain. Jain University in that yellow cap. There they go, both together. This is the 3rd part. And this is butterfly. Oh, it's adding so much to the anxiety and the nervousness, yes. I must say. And here go the freestyle, both of them together. Anna and Jain.
Siva Sridhar in that final lap. So he has 4 individual gold medals, and like we saw here, a 5th one as a part of the Jain University team. So when you have performers and the stars like Shiva Sridhar, and when you have university like Jain University, I think the right combination there as well. Absolutely, and Jain has done the right thing by picking them, or we could say alternatively they have done the right thing by picking Jain University. So I think many more universities are participating. As we know, there are 200 odd universities, more than 200 universities participating. So they'll be following the same footprint. It's a blueprint for them. I think it happens state to state. For example, if you look at the development of Indian sport, Odisha has as a state opted for hockey, and they are the sponsors of Indian hockey team. They have hosted the 2 world championships for the last 2 times, and so on. So similarly, Jain University seems to have specialized in swimming. Similarly, the universities in Mumbai, Maharashtra have the hold on Malkham, and possibly Varanasi with yoga, yet to be seen. And then what is interesting to be seen for the first time is how rowing pans out. Absolutely. So rowing, they're making a debut in the 3rd edition, and as we saw in Gorakhpur, हमने आपको glimpse दिखाए. So when we talk about 800 meters, it's Pritha V in the girls category. आइए, let's catch the glimpse. So in the Pritha V, they're grabbing the gold for the field. Yes, and this is 16 lengths, and this is what the endurance is tested. Absolutely. Your mind, your stamina, your ability to hang on, to believe in yourself. And this boy has taken the lead right from the start. There he is, alone, as we say, the loneliness of the long distance swimmer. I think you barely get time to think on those lines, because everything is so quick. It's just, fighting against yourself, and just pushing the boundaries. Yes. And showcasing the world that yes, we have the power. Yes. And we can do it. Taking the right decisions at the right time in a continuous flow. There you go. Finally his aim. So there from the swimming, let's take a look at the individual medals tally, and as we have said a couple of times, the university who has reserved their position at the top slot. आइए नजर डालते हैं. So it's Jain University everywhere. Now they have 6 golds, 3 silver and 4 bronze, 13 in all, with Jain University sitting smartly at the top. And I think their hunger continues, and they'll be performing the best of their abilities, followed by Guru Nanak Dev University at number 2 from Amritsar, who have 10 medals in all, 4 gold and 6 silver. And at number 3, the third university that we have is Punjab University with the 12 medals. 3 they have gold and silver and 6 bronze in their kitty. So after number 3, let's move on to the 4th. It's from Haryana, the Kurukshetra University, who has 5 medals with 3 golds already they have. And at number 5, the top 5 as we are talking about, it's Christ University, and they have 3 gold and 1 bronze. All courtesy Amish Gowda. Does Rohit belong to the same? Yeah, and the other important thing here is that Jain University is on top courtesy their performances in swimming. And Guru Nanak and Punjab are catching up. It will be interesting to see as athletics comes in tomorrow how it develops. And of course, the wrestling has started, where I think the north will dominate. And few more swimming events we still have in the later part of the day. So we will see a lot many ups and downs in this medal tally as well. But as we see, Jain University and Guru Nanak Dev University, just a gap of 2 more gold medals. So towards the end of the day, we will know do we have a new number 1, or Jain University continues to be there at the top slot? Yes, it will be very interesting. So it's competitive, and we've got 2 northern universities trying to get up to Jain University. So there we saw the medal tally as well. And when we talk about such medals, क्या लगता है, when you're performing so well in the sports, are you able to concentrate on the academics? I think many of the parents would be thinking on those lines. It's a fine balance. You have to do it. You said you were good at mugging up and rapidifying the answers. And I know. I remember when I was in college, and
You had to go out for a 10-mile run in the morning and come back, and first class at 8:30 a.m. and you're sleeping on that desk in the classroom, and the teacher saying, what are you doing? And I said, sir, I have to run in the morning. Okay, I'll give you attendance. You go away for 1 month. I said, thanks, sir. I can manage to learn. I'll take from you the books from which you are teaching, and I will learn up and do well. And I did well in my studies also. But the children who don't have such rote memories, it's a tough scene. I think what I have seen now in the ground where I coach in the Nehru Stadium in Delhi, all the children who are doing well in athletics do not study at all. They only go for exams, and that too, I think people are helping them to pass their exams. Yes, so I think you were blessed with good teachers as well. When you have such educators probably who can actually say, concentrate on the thing which you are excelling, be it music, be it dance, any form of art or sports, we'll take care of the study part. Yeah, I think so. That is the kind of mentality that has to be thought of. I remember when I went to study to UK, Loughborough University for my sports science, I was used to idolize Sebastian Coe, who then became an Olympic and world champion. And he was studying at the same time. And when I became a junior champion of India, he was the junior champion of England, and we were round about the same standards. And then when I studied 5 years in college, I deteriorated, could not improve, while he became a world champion. So the first question I asked my teacher when I went to Loughborough was, how did Sebastian Coe achieve this? Because I don't think it's possible to do both together. He said, Rupinder, it's a lot of planning. The whole university sat down, his economics teacher sat down, his coach sat down, his father then was his coach, and they all said that Seb cannot do it like a normal child in 3 years. So we gave him the opportunity to graduate over 6 years, in which time he also excelled in sport. So I think it's that's the kind of planning that people must take at a collective level in order to encourage sport. So I think one medal or that souvenir, that memento goes to the player, but the real winners are the people around you, your team, your family, your siblings, your teachers, your coaches, and everybody combined together and that fetching you and helping you to fetch that medal. तो आइए यहाँ से स्टूडियो से आपको ले चलते हैं हॉकी के इवेंट की तरफ, जहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी इज अप अगेंस्ट सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी.